Hello, this is FaiZ SiR here. Welcome you all to Study from Home. Let's start with our Class 5 EVS with chapter number 7, Experiments with Water. So, without wasting much of our time, let's start with our today's point. Do this and find out. Here, I'm just going to explain an experiment that you will have to do by making the groups of your friends and in next video I will give all the answers and observations that contain in this experiment. So let's see it. What is the experiment or what activities that you will have to do? Do this experiment in groups of 4 friends. Each group will need a big pot filled with water and the things listed in the table. Put each thing one by one in water and observe. Write your observations in the table given on the next page. मीन्स ये एक्सपेरिमेंट करने के लिए आप लोगों को आपके फ्रेंड्स के ग्रुप बनाने हैं इक्वल नंबर्स में. आफ्टर दैट यू रिक्वायर अ पॉट फिल्ड विथ वाटर, यानी एक बड़ा सा पॉट चाहिए जिसमें पानी फुल भरा हुआ हो. एंड थिंग्स लिस्टेड इन द टेबल, यानी नेक्स्ट पेज पे जो टेबल दिया गया है वो उसके ऊपर आपको थिंग्स के बारे में बताएगा. वो सारी की सारी चीज़ों को आपको कलेक्ट करके एक्सपेरिमेंट करना है. पुट ईच थिंग वन बाय वन, एक के बाद वो सारी चीज़ें आपको पानी में डालनी है. एंड यू विल हैव टू ऑब्जर्व. व्हाट टू ऑब्जर्व, लेट्स सी. हियर you will be given a table. Mark right for the things that float. Mark wrong for the things that for those that not that sink. मीन्स यहाँ पे आपको जितनी भी चीज़ें हैं वहाँ पे आपको राइट मार्क करना है जो फ्लोट होती है, और जो फ्लोट नहीं होती है मीन्स सिंक हो जाती है उसके लिए आपको रॉन्ग मार्क करना है. एंड आफ्टर दैट एक के बाद एक चीज़ें रखने के बाद व्हाट यू विल हैव टू डू दैट हियर इन फर्स्ट कॉलम यू विल बी गिवन थिंग्स टू बी पुट इन वाटर, यानी चीज़ें जो आपको पानी में रखनी है. आफ्टर दैट इन सेकेंड कॉलम आई गेस्ड बिफोर आई डिड, मीन्स आपने क्या सोचा था चीज़ों को पानी में रखने से पहले के क्या होगा. मीन्स व्हाट डू यू हैव थिंक और व्हाट विल यू व्हाट डिड यू थिंक बिफोर द थिंग्स विच you are going to put in a water. And after that I show when I did it, means after putting such things in the water what actually you have observed and what is the result that you will have to write in this column or in this box. Now A, empty ball or कटोरी. मीन्स जब आपके माइंड में जब आप एक चीज़ लेते हो जैसे कि एम्प्टी बॉल, और जब आप पानी में रखने जा रहे हो देन पानी में रखने से पहले आपने क्या सोचा था एंड एक्चुअली में क्या हुआ. देन यहाँ पे एक चीज़ दैट के सपोज कि आपने ऐसा सोचा था दैट के बॉल ऑफ एम्प्टी बॉल पानी में रखेंगे देन इट विल सिंक. आपने ये सोचा था बट एक्चुअली जब आपने पानी में उसको रखा देन it is not, means it doesn't, कि वो पानी में सिंक नहीं हुआ बल्कि वो फ्लोट हुआ. B, after putting in 6-7 pebbles one by one, मीन्स बॉल में एक के बाद एक पेबल्स मीन्स छोटे छोटे स्टोन्स कटोरी में आपने रखे. तो आपने क्या सोचा था, मीन्स स्टिल इफ़ यू हैव थिंक अबाउट दैट कि मैं पहला रखूँगा देन तुरंत ही वो जो बॉल है वो क्या हो जाएगा, सिंक हो जाएगा,
या फिर फ्लोट होता रहेगा, राइट। देन वॉट एवर द थिंग्स दैट यू हैव ऑब्जर्व्ड वो आपको यहाँ पे लिखना है। एंड these answers may vary from student to students, यानी स्टूडेंट्स के हिसाब से डिफरेंट डिफरेंट आंसर हो सकते हैं। And after putting such 6 and 7 pebbles one by one in a bowl, actually what you have observed and what was happen or what did it happen, यानी एक्चुअली में क्या हुआ वो सारी चीज़ें रखने के बाद that you will have to write in the box. Next, iron nail or pin, same thing you will have to observe, or same whatever the things that you have guessed that actually you have to write in the box. And actually what happened you will have to write in the box. Float or a sink or a sink or a float, whatever. Matchstick, same. After fourth, empty plastic bottle with its lid close, मीन्स एक एम्प्टी प्लास्टिक बॉटल आपको लेनी है जिसका ऊपर का जो ढक्कन है वो क्या हो, बंद हो। बॉटल हाफ फिल्ड विथ वाटर, पहले यानी एम्प्टी बॉटल है जिसका ऊपर का जो ढक्कन है लीड है वो क्या होता है, क्लोज होता है। तो क्या आपने सोचा था दैट कि इट विल सिंक और फ्लोट, दैट यू विल हैव टू राइट इन दिस बॉक्स, राइट। एंड द आंसर इज इन this box. Now after that, B, bottle half filled with water, means whatever you have guessed you have to write there, and what actually has happened or what will happen that you'll have to write here. Bottle full of water, same. Now after that, aluminium foil from medicine packing, means कि यहाँ पे aluminium foil but not that in which are food generally wrapped, but which aluminium foil here consider that they have mentioned specially from medicine packing, means कि जो टेबलेट आती है मेडिसिन से उसके पीछे का जो फॉयल पेपर है वो उसकी यहाँ पे बात हुई है। ए, ओपन एंड स्प्रेड आउट, एंड ऑल्सो यानी आप फूड फॉयल यानी जो पतला वाला आता है वो ले सकते हो। आफ्टर डेट, pressed tightly into a ball, means पहले ए ओपन एंड स्प्रेड आउट, पहले आपको उसको ओपन करना है और उसको फैला देना है, एंड दैट यू विल हैव टू पुट इन अ वाटर पॉट। नंबर बी, प्रेस्ड टाइटली इनटू अ बॉल, फिर आपको वो उसका बॉल बना लेना है, जनरली यू आर एक्सपर्ट इन इट, and then you'll have to put it in a water, and after you have to write what actually you have guessed and what it will happen. And C, in a cup like shape, after that you'll have to put it in a, means you'll have to prepare a cup size material, or you'll have to prepare cup from a foil paper, यानी आपको एक, जैसे आप मड में से एक कप बनाते हो डिफरेंट वेसल, कुछ उसी तरीके से एल्यूमिनियम फॉइल में से आपको कप बनाना है। देन आफ्टर दैट यू विल हैव टू ऑब्जर्व दैट व्हाट एक्चुअली यू हैव गेस्ड एंड व्हाट एक्चुअली इट विल हैपन। नाउ नेक्स्ट, सोप केक, हियर ऑल्सो यू विल हैव टू write what you'll have to guess and what actually it will happen. B, soap cake on a small plastic plate, मीन्स सोप केक तो लेना ही है, सोप केस, राइट, और उसको प्लास्टिक प्लेट पे रख के एक्चुअली क्या होता है वो आपको ऑब्जर्व करना है। एंड अ पीस ऑफ आइस, यानी आइस का पीस लेके भी आपको सेम थिंग आप ऑब्जर्व करनी है। एंड आफ्टर पुटिंग सच थिंग्स एंड बाय guessing and after observing the result, writing in the what you saw and what actually it did, right, after writing that you will have to give the answer of this fill in the blanks, यानी ये सारी एक्टिविटी करने के बाद कि क्या आपने पहले गैस किया था और एक्चुअली कौन सा रिजल्ट आया, वो सारा का सारा ऑब्जर्व करने के बाद आपको ये टेबल और ये फिल इन द ब्लैंक्स फिल्ड अप करनी है। फाइंड आउट फ्रॉम द अदर ग्रुप्स विच थिंग्स फ्लोटेड एंड विच सैंक इन द वाटर, और आपने जो ग्रुप बनाए थे उनके पास से भी आपका जो
देता है कि कौन सी चीज़ फ्लोट हुई पानी में और कौन सी चीज़ सिंक हो गई, मीन्स डूब गई, वो सारा का सारा डेटा कलेक्ट करना है. बाय डूइंग सच एक्टिविटी यू विल कम टू नो अबाउट द वास्ट नॉलेज ऑफ what things float on water and what does not or what do not. After doing the experiment, fill in the blanks. Number 1. The iron nail dash in water but the katori dash. I think this happened because reason. The empty plastic bottle dash on water, sink or float. The bottle filled with water sink or float because the reason means यहाँ पे फर्स्ट में भी आपको जो दिया है वहाँ पे सिंक और फ्लोट हुई थी या फिर सिंक हुई थी वो आपको लिखना है, और अगर सिंक या फिर फ्लोट हुई थी तो उसका रीज़न क्या है वो रीज़न आपको यहाँ पे मेंशन करना है. And third one, the aluminium foil blank when it was sprayed out means float or a sink, either whatever the answers you have guessed out and you will come to know about. When pressed tightly into a ball, it means when you have rolled it and make it a ball. After that, what actually you will have guessed and what actually the reason that you will have to write whether sink or a float. This may have happened because dash means ये भी हुआ था because means उसका रीज़न आपको लिखना है. I suggest you that please do this activity, right? It will create a fun for you, as well as it is also one kind of activity that increase a knowledge regarding that what things float in water and what things do not float, or what things sinks in water and what things do not. So I just hope you all will do this, and inshallah in next video I will give whole details of this table as well as this fill in the blanks. But before, I appreciate if you will do this activity by your own making the group of friends, and